हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट करेंगे। ओके, एज वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो बायोकेमिस्ट्री का बेसिक्स, उसमें हमने देखा। तो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर न्यू वीडियो is out. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. So first of all, carbohydrates classification we will see. Okay, classification. Monosaccharide. Monosaccharide means simple sugar. ओके, सिंपल शुगर। इसमें क्या होता है? सिंगल यूनिट और वी कैन से सिंगल चेन, राइट। सेकेंड टाइप ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स ऑलिगोसैकेराइड्स बेसिकली 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ओके, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स join together by glycosidic bond. ओके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। इसमें भी देन देयर आर टाइप्स, ओके, लाइक डाइसैकेराइड, ओके, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा एंड सो ऑन। आई विल राइट। ओके, डाई में 2 होंगे मोनोसैकेराइड यूनिट, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, राइट। एंड थर्ड टाइप इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स मीन्स मोर देन 10 सैकेराइड मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ओके, लॉन्ग चेन बेसिकली कॉम्प्लेक्स, इसे हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ओके, मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर्स and polysaccharide complex sugar. Got it? And what is the general formula basically? General formula CH2ON. Okay, this is the general formula. Carbon, hydrogen, oxygen containing biomolecule. Okay, mostly it contains carbon, hydrogen, oxygen. Now let's see monosaccharides. Monosaccharides means what? Simple sugar. Okay, this is basically polyhydroxy aldehyde or ketone moieties, okay, or molecules. Polyhydroxy aldehyde or ketone derivatives. Okay, we can see more. What is polyhydroxy? More OH, right? Polyhydroxy alcohols भी बोल सकते हैं हम। ओके, aldehyde और ketone derivatives. Then इसमें हम ग्रुप कर सकते हैं आगे aldose and ketose, ketoses. Aldoses means aldehyde containing and ketoses means ketone containing. Okay, sugars, aldoses and ketoses. जो स्टार्टिंग कार्बन नंबर है that is 3 carbon. Okay, contains at least 3 carbons. तो स्टार्टिंग में 3 कार्बन से शुरुआत होती है। ओके, नाउ लेट्स सी द मोनोसैकेराइड। बेसिकली दिस इज अ aldose. ओके, aldoses, right? First molecule is glyceraldehyde.
3 glyceraldehyde, right? And this is a aldotriose. Okay, कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग ऐसे हम बोल सकते हैं. Okay, nomenclature या name. This is 3 carbon, 3 carbon, then 4 carbon, 5 carbon, and 6 carbon. Okay, so aldotriose मतलब 3 carbon, aldotetrose, tetroses 4 carbon, aldopentoses 5 carbon, aldohexoses 6 carbon. Okay, you can see these are the molecules. And D means हमने previous video में देखा है what are D and L forms. D means right side में plane polarized side is rotated. Okay, so D is right basically. You can see और ये जो बॉक्स में दिया है जिसको बॉक्स किया है those are the common aldoses. Common aldoses found in organisms. Okay, biomolecules which are common, right, in the category of aldoses. Okay, उसमें भी जो 6 कार्बन के हैं aldohexose, we know this is a glucose. See, glucose is very common, right? Glucose metabolism कितना बड़ा टॉपिक है. Okay, very important glucose. Then mannose and galactose. This comes in 6 carbon, right? See this glucose, mannose and galactose 6 carbon. 5 carbon का एक ही important है ribose, which is found in nucleic acids, right? Ribose sugar and nucleotides, DNA, RNA, and glyceraldehyde. तो this is a precursor basically of common metabolic pathways. मतलब जब pathways को connect करता है, right? Interlinks different pathways. Okay, this is the starting molecule, or we can say intermediate है basically glyceraldehyde, which we will see in it is in the component of lot of pathways, right? So this is the aldose basically. You have to remember this, right? Aldose में common कौन से है? And जो common है, those are also reducing sugars. Okay, reducing sugars है. You have to note this, like glucose, galactose, mannose, ribose, glyceraldehyde. These are reducing one. The arrows indicate stereochemical relationships, right? Not biosynthetic pathways. Okay, biosynthetic pathways नहीं है ये, right? These arrows which are shown, this indicates stereochemical relationship. The configuration around C2, right? C2 red distinguishes the members of each pair of monosaccharides, right? जो red में mark किया है, that is different. See, you can see here. Okay, that distinguishes members of each pair of monosaccharide. The L counterparts of these 15 sugars are their mirror image. Okay, so this is D, and जो L forms होंगे वो mirror images होंगे. The biologically most common aldoses are boxed. Okay, this is the ketoses chart. Okay, ketoses. See, C2 is a ketone, right? C2 ketone group present है. So first is dihydroxyacetone, right? हमें पता है कि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन भी पाथवेज को कनेक्ट करने में इंटरलिंकिंग में रोल है. बहुत सारे पाथवेज में आपको दिखेगा, राइट? प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी दैट इज डिफरेंट कार्बन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन and 6 carbon. And how these are named? Like ketotriose. Okay, then
कीटो पेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। ओके, इसमें जो कॉमन है सेम लाइक प्रीवियस बॉक्स किया है। ओके, आई विल हाईलाइट द नेम so that you can understand. The configuration around C3, that is red, distinguishes the members of each pair. The biologically most common ketoses are boxed. Okay, dihydroxyacetone, ribulose, and fructose. These are common ketoses. Now this is a glucose molecule. Okay, D-glucose. Mostly D forms are C. Okay, mostly we will write here D forms are common than L forms. Now this is a glucose molecule. Numbering is done from C. जो functional group है like aldehyde, so that is number first. Okay, so glucose we know this is the aldose, means 6 carbon, right? 6 carbon. जो D है उसमें ये OH comes to the right. Okay, comes to the right. What else? अभी जो glucose molecule है, okay, glucose molecule इसमें there are 2 chiral centers. Whatever I am telling you, that is very important, right? Basically C1 and C5. Okay, 2 chiral centers, also we say asymmetric centers. Then बाकी जो है कार्बन एटम्स, those are achiral. Okay, जो 4 कार्बन है. So how much stereochemical isomers are possible? See, ऐसे हम फाउंड आउट कर सकते हैं. Okay, we are studying of glucose. Possible stereoisomers is equal to 2n, right? And n is a number of achiral carbon. ओके, तो यार इट इज अगर 2 chiral centers है मतलब 2 कार्बन है जो chirality शो कर रहे हैं, then the rest carbons are achiral. So here the answer will be 16. So 16 stereoisomers are possible from the glucose molecule, right? Sorry, my mistake here. C5 no, C6, C6 and C1 are the 2 chiral centers. Okay, this is about the glucose. Okay, so remember जो this color I have used, this is for glucose. अभी हम कलर चेंज करके कीटोसिस देखेंगे. So here what we have to do, 4 minus 1 करना है in the case of ketose. So that becomes 2 raised to 3 is equal to 8. This is for ketosis. Next thing is when the aldehyde or a ketone reacts with alcohol, it forms a hemiacetal or hemiketal. Okay, when alcohol reacts with aldehyde, it forms hemiacetal, and when alcohol reacts with ketone, it forms hemiketal. Got it? तो ये important है. Why this is important? I will show you now. See, अभी जो इसमें चेन है, राइट, 6 कार्बन एटम्स, वी नो ये जो OH है C5 का OH एंड C1 का कार्बोनिल ग्रुप.
इसके बीच में ही रिएक्शन होता है, राइट। सी सी यू कैन सी हियर में ही दे react with each other and form a cyclic ring like structure. Okay, cyclic ring like structure. So this is a linear form of D-glucose and we can say this is a hemiacetal form. Okay, hemiacetal form. तो cyclication हुआ है, cyclicization, ring formation. This is called beta D glucopyranose. Okay, this is basically upward projection, right? Upward projection. Can see here कैसे यहाँ पे rearrangement हुआ है. तो C6 यहाँ पे ऊपर है. See the numbering C1, C2, right? You can see properly. तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड प्रोजेक्शन, राइट. एंड ये जो दिया है दैट इज मॉडल. सी द लीनियर फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज yielding the cyclic hemiacetal beta D glucopyranose. Okay, why pyranose? You can see here because it looks similar to pyran. Pyran ring की तरह दिखता है. That's why it is named as pyranose. Right. Now fructose. फ्रुक्टोज ये क्या है? कीटोज है, इसमें कीटोन प्रेजेंट है. तो अगेन इसमें क्या C5 reacts with C2. Okay, you have to note this. ग्लूकोज में C5 with C1 because CHO 1 ग्रुप है, कार्बन 1 में आता है, एंड जो कीटोन ग्रुप है वो C2 पे आता है. तो इन फ्रुक्टोज बेसिकली C5 reacts with C2 OH and O और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है दैट इज बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज. ओके, अभी यहाँ पे बीटा दिया है. व्हाट इज दिस बीटा नाउ? फिर अल्फा भी होगा. बीटा कैन नॉट बी अलोन, राइट. सो वी विल सी व्हाट इज दैट. जस्ट कीप वाचिंग. अभी जो फ्यूरान है यहाँ पे क्या दिया है? नेम फ्यूरानोज. सो दिस फ्यूरानोज इज कंपेयर सिमिलर टू फ्यूरन. यू कैन सी हियर, राइट. अभी पायरन एंड फ्यूरन में क्या डिफरेंट है? इसमें 6 मेंबर रिंग है और इसमें 5 मेंबर रिंग. ओके, यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5. ओके, 6 मेंबर रिंग एंड जो फ्यूरन है इसमें 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 एंड 5. इजी. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न? द लीनियर फॉर्म ऑफ डी फ्रुक्टोज yielding the cyclic hemiketal beta fructofuranose. The cyclic sugars are shown in both Haber projection and in stick form embedded in their semi-transparent phase filling models with C green, hydrogen white and O red. Okay, phase filling model दिखाया है. Now see, this is the next term you have to know. This is about anomers. Okay, anomers. जो मैंने बोला अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ दिस रिंग, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर. ओके, तो यहाँ पे जो अल्फा है, राइट, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज. ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है साइक्लिक रिंग का. ये जो है 1, यू कैन सी दिस 1 एंड दिस 6. ओके, 6 का जो ग्रुप है एंड ये OH of C1, these are opposite to each other, right, opposite facing. So this becomes alpha, right. इसे हम अल्फा बोलेंगे. अभी बीटा में देखो C6 का CH2OH एंड C1 का OH फेसिंग सेम, राइट, ऊपर OH OH. यहाँ पे एक OH ऊपर एक OH नीचे. So this is the alpha and this is the beta. So this is called anomers. Okay, the monosaccharides alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. Alpha and beta drawn as upward projection and ball and stick model. Okay, जो पहला दिखाया है that is ball and stick model. Interconvert through the linear form.
राइट, मतलब मिडल में लीनियर फॉर्म है, इनका इनका इंटर कन्वर्जन होता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म का इंटर कन्वर्जन थ्रू द लीनियर फॉर्म। ओके, दे डिफर ओनली बाय द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द anomeric carbon C1। ओके, anomeric carbon C1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। C1 कार्बन, इसमें चेंजेस होते हैं। इफ द OH इज डाउन, स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड अल्फा, और OH अगर ऊपर है then the structure will be called beta। Okay, this is a glucose, so we will call it as alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose। यहाँ पे और एक चीज है which is important, I will write with colors। okay, green color, epimer, epimers। epimers में there is a single carbon difference। okay, single carbon difference in the epimers। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है? एपीमर्स, दे आर एपीमर्स। ओके, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सी द स्ट्रक्चर प्रॉपरली। C4 जो है ये अलग है, राइट, C4। ओके, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में C4 का डिफरेंस है, so they are epimers at C4। एंड ग्लूकोज एंड मैनोज, मैनोज में देखो C2 में डिफरेंस है, राइट, मैनोज में C2 का डिफरेंस है, बाकी सब कार्बन सेम है। So like this, single carbon difference is known as epimers। So you have to remember about glucose, galactose and mannose। These are epimers of each other। Glucose and galactose में C4 का epimer and glucose and mannose में C2 का। तो यहाँ तक हमारा मोनोसैकेराइड्स का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सी डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड में क्या होता है? मोनोमर आर लिंक टुगेदर। ओके, अगेन दिस इज अ हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल लाइक थिंग। लेकिन यहाँ पे मोनोसैकेराइड, टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड रिएक्ट विद ईच अदर। जो पायरानोज फ्यूरानोज जो स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर, उसमें इंटर कन्वर्जन होता है विद इन द सेम चेन, राइट, बट दिस इज बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स। लाइक सी इन द केस ऑफ माल्टोज, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, माल्टोज में क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, उसमें रिएक्शन होता है। ओके, दिस इज अ हेमीएसिटल एंड यहाँ पे अल्कोहल OH ग्रुप, राइट। तो ये जो है इसमें रिएक्शन होने से कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, राइट, दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन विद द रिलीज ऑफ वाटर, H2O इज रिलीज, एंड ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दिस इज बेसिकली ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। आई विल राइट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो यू कैन सी ये जो नेमिंग होती है दैट इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल, बिकॉज दिस इज अ ग्लूकोज ग्लूकोपायरानोस, राइट। तो पायरानोसाइल 1,4 है। ओके, यू कैन सी दिस 1 C1 एंड C4, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो 1,4 डी ग्लूकोपायरानोस। ओके, so this is one example of disaccharide, it is again important, maltose। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में बॉन्ड है, राइट, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ओके,
and this is 1,4. Okay, 1,4. Got it? ये रिंग स्ट्रक्चर है, that is why you have to remember glucopyranosyl and glucopyranose. Got it? Then the next two are the lactose and sucrose. तो लैक्टोज में गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट? यू कैन सी हियर दिस इज अ बीटा गैलेक्टोज, ये बीटा गैलेक्टोज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज बीटा ग्लूकोज, एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन C1 C4. ओके, 1,4 के बीच में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देन वी कैन राइट हियर लाइक 1,4 galactose and glucose. Both are galactopyranosyl, galactopyranose. Okay, अल्फा डी, बीटा डी, दोनों भी बीटा डी है, बीटा डी, राइट? एंड उसके पहले हम ओ भी लगाते हैं कभी कभी, बिकॉज ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट? एज वेल एज इन द नेक्स्ट सुक्रोज, सुक्रोज में ग्लूकोज है एंड फ्रुक्टोज है, राइट? ग्लूकोज है एंड फ्रुक्टोज है. हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द C1 and C2. Okay, C1 of glucose, C2 of fructose. अभी ये जो ग्लूकोज है दैट इज अल्फा, राइट? ग्लूकोज इज अल्फा, फ्रुक्टोज इज बीटा. ओके, हियर बोथ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बीटा है. गॉट इट? देन दिस सुक्रोज known as stable sugar, stable sugar, and ये जो लैक्टोज है दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क. दिस इज अ प्लांट डेरिवेटिव. सुक्रोज जो है दिस इज प्लांट, फाउंड इन प्लांट, ए प्लांट डेरिवेटिव. अभी ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल भी होती है. यू कैन सी ये मॉलिक्यूल्स जो है डाइसैकेराइड बना है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर. मतलब एडिशन ऑफ वाटर अगर हमने किया then this molecule will break, separate into two monosaccharide units. Got it? So this bond can be broken. This reaction is reversible. What else? Maltose is a reducing sugar. Same lactose. Lactose भी reducing है. Sucrose is non-reducing. Okay? तो डाइसैकेराइड्स में ये जो है दिस आर कॉमन sugars found in disaccharide, maltose, lactose, sucrose. You have to remember their bonds, okay, bond formation between which carbons taking place, then which are the units like galactose and glucose forms the lactose, okay, glucose, fructose, sucrose form करता है. Like this you have to know. So we will end here. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.